कीटनाशक मिशन है तो जीत पक्की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाने जा रही है। 2019 में इसके खिलाफ कुल मिला के 18 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर 16 दिन सुनवाई हुई। इस पर 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज वो अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां सीजीआई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। फैसले की घड़ी आ चुकी है। घाटी में इसको लेकर अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये फैसला आने वाला है। ये सीधी तस्वीर आपको सुप्रीम कोर्ट के दिखा रहे हैं, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था और इस वक्त ये फैसला पढ़ा जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको सुप्रीम कोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर सीजीआई ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। कोर्ट का फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। आज संविधान पीठ इस फैसला सुना रही है। 5 सितंबर को इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था। 18 याचिकाओं पर कुल मिला के 16 दिन तक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद संविधान पीठ ने अपना फैसला लिया था और इसे सुरक्षित रख दिया था। अब आज इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है। फैसले की ये सुनवाई है, यानी कि फैसला सुनाया जा रहा है और ऐसे में सीजीआई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। A part of the functions of the state government, and the state government can exercise the remaining because the suspension of the state government is an automatic consequence of the proclamation under Article 356. It rather indicates that the scope of the power exercised by the union government must depend on the circumstances for issuing the proclamation. Fourth, clauses A, B, and C of Article 356(1) grant the President independent powers. However, the power provided under Clause C is broad enough to encapsulate the power of the President to assume functions under Clause A and declare under Clause B that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by Parliament. Fifth, the principle underlying Article 356(1)(c) is that the exercise of power by the President must be desirable or necessary to give effect to the objects of the proclamation. The commonality in both the necessity and desirability standard is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. Thus, the principle which runs through Article 356(1)(c) and which also guides the exercise of power under Article 356(1)(a) is that the exercise of power must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. And sixth, when a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the union executive on behalf of the state is not subject to challenge. Opening up challenge to every decision would lead to chaos and uncertainty. It would in effect put the administration in the state at a standstill. Therefore, the following standard is laid down to assess actions under Article 356 after the proclamation has been issued. A. The exercise of power by the President under Article 356 must have a reasonable nexus to the object of the proclamation. B. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. After a prima facie case is made, the onus shifts to the union to justify that the exercise of power had a reasonable nexus with the object of the proclamation. And C. The exercise of power by the President for everyday administration of the state is not ordinarily subject to judicial review. The argument of the petitioners that the union government cannot take actions which have irreversible consequences when a proclamation under Article 356 is in force is not accepted. The power of the legislature of the state under Article 357
to repeal or alter or amend a law enacted by Parliament in exercise of the power of the legislature of the state must be read in the context of the amendment introduced by the Constitution, 42nd Amendment Act 1976. Before the amendment, the law to the extent of incompetency would automatically cease to exist after a buffer period and actions done were expressly saved. However, an express repeal by the competent legislature is required for the law to cease to exist after the amendment. The repealing statute would in such case make provisions for actions taken during the subsistence of the legislation. The observations in Krishna Kumar Singh on whether the consequence of an ordinance can subsist even after the ordinance ceases to exist cannot be transposed to interpret the limits of Article 356 because an ordinance which has the effect of a law by its very nature has a limited life. The argument of the petitioners that Parliament can only assume the lawmaking powers of the legislature of the state when the proclamation under Article 356 is issued is not accepted. The purpose of Article 357 is to ensure that while exercising the powers of the legislature of the state, pursuant to a declaration under Article 356(1), Parliament, or as the case may be, the President, are not impeded by an absence of competence which would have impeded the exercise of a similar power in the absence of a proclamation under Article 356. Further, Article 357 does not contain a non-obstante provision which overrides Article 356. To interpret Article 357(1) as a restriction on Article 356(1)(b would be to read in a restriction which the plain terms of the Constitution do not provide. As held above, the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review, and immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by Parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state, which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. It is reiterated in Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, which is unamendable. Sixth, the preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, Sections 3, 5, and 147 of the State Constitution,
coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination as understood by the definition of sovereignty exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own constitution. Seventh, all states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is a feature of asymmetric federalism, like Article 370, which became applicable to Jammu and Kashmir on the adoption of the Constitution. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And eighth, the limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Kaul was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir retains sovereignty upon integration with the dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose, to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. D. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370, Clause 3, to issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist, subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373, that is Clause 3, encapsulates the process by which the Indian states could ratify the Constitution of India. The ruler of each Indian state had to issue a proclamation ratifying the Constitution on the recommendation of the Constituent Assembly, where such body existed. In states where the Constituent Assembly was not convened by then, the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the Constitution. When a Constituent Assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the Constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly referred to in Clause 2 shall be necessary before the President issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, Clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with
was not binding on the President. Second, at the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370, Clause 3, was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. Third, when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist, only one of the special circumstances for which the provision was introduced ceased. However, the other circumstances, that is the special circumstances because of the situation in the state of Jammu and Kashmir, for which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constituent Assembly ceased to exist. This is recognized by the judgment of the Constitution Bench in Sampat Prakash. Fourth, the effect of the President declaring under Clause 3 of Article 370 that Article 370 ceases to exist is that the provisions of the Constitution which apply to every state in the first schedule would equally apply to the state of Jammu and Kashmir. Articles 370(1)(d) and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाते हुए ये बात कही है। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था और ऐसे में फिलहाल ये फैसला पढ़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ये फैसला पढ़ रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं। आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के ऊपर सही या गलत, इस पर अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जा रहा है। और वहीं शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है और ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छे संवेदनशील भी है और इसके साथ साथ हमारे आदिवासी बहुल राज्यों में ये पहले बार हमारे देश के प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर गए और वहाँ से देश के लिए जो योजना वहाँ से लॉन्च किया, इसके बारे में भी हमारे सदस्य ने व्यक्त किया। इसके लिए हम भी उनको आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के जो केंद्र आयोजित योजना है, इसके अंदर भी झारखंड में हम लोग पैसा भी देते हैं। और उनका जो प्रश्न है गिरिडीह, वो गिरिडीह में जो झारखंड कॉलेज गिरिडीह है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग 1.20 करोड़ ग्रांट भी दिया है। और जो केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह से एक प्रस्ताव आए हैं और केंद्रीय विद्यालय तैयार करना ये हमारे शिक्षा विभाग की एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्ताव आते हैं, उसके बाद उसको एग्जामिनेशन होता है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी वो उनका व्यू बताते हैं, ये प्रक्रिया पर चलते हैं। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही कहूँगा कि चूँकि गिरिडीह लोकसभा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और शिक्षा के क्षेत्र में कमी है, इसलिए प्रयास किया जाए, उसको प्राथमिकता दिया जाए। और साथ साथ झारखंड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की पंजीकरण क्या स्थिति है, विशेषकर ST SC और OBC वर्ग के छात्रों की। तो वहीं कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 350 करोड़ रुपए कैश मिलने पर बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस से हिसाब मांगा। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने तमाम बीजेपी सांसद एकजुट हुए और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस प्रदर्शन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए। बीजेपी सांसदों के मुताबिक कांग्रेस के बड़े नेताओं ने काली कमाई पर चुप्पी साध ली है, लेकिन उन्हें जनता को इसका हिसाब देना चाहिए। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। अभी तो स्कोर चल रहा है, ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है
कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। सोनिया गांधी जी जो ईडी, आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही हैं, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही हैं, आज हम जानना चाहते हैं, देश की गरीब जनता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित्त मात्र है, यह तो शुरुआत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सारे लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा। और ये जवाब देना होगा, ये पैसा किसका है। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश में इन सभी भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके ही चैन लेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग लगेंगे और इनको जनता में भी हम इनकी करतूतों को बताएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी से। प्रकाश जी, आपके हाथ में जो तख्ती है, कांग्रेस ने बस भ्रष्टाचार किया, देश को बर्बाद किया और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या 354 करोड़ अगर घर में मिलते हैं तो क्या है, ये लीगल मनी होती तो बैंक में जाती ना, वो घर में कोई रखता है क्या? घर में रखा क्योंकि ये काला धन था और काला धन ये कांग्रेस का एटीएम था और इसीलिए कांग्रेस ने, और मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस उसको निकालने के बजाय, हटाने के बजाय उसका समर्थन कर रही है कि ये उनका व्यक्तिगत मैटर है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। पार्टी का लेना देना है ये साहू के घर मिला पैसा, ये एटीएम था। ऐसे अनेक एटीएम है कांग्रेस के। कांग्रेस माने भ्रष्टाचार, बिजनेस का पैसा कैश में कोई घर में रखा, ऐसा मुझे बिजनेसमैन दिखाओ। ये बिजनेसमैन कोई पैसा आया तो बैंक में ब्याज मिलता है, तुरंत डिपॉजिट करेगा, उनको ब्याज मिलेगा, उनका नफा दुगुना होगा। लेकिन उसके बजाय वो घर में रखता है क्योंकि वो काला धन था। ये कांग्रेस वाले देश को मूर्ख समझते हैं, देशवासियों को मूर्ख समझते हैं और इसलिए ये आज ऐसी इस तरह के बातें करती है। सर, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये चुनाव में आप लोग बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे और राहुल सोनिया से जवाब मांगते रहेंगे? नहीं, कांग्रेस चुनाव में कहीं है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये तो सारे मुद्दे लोगों के मन में है, इसीलिए तो मोदी जी को लाया और मोदी की गारंटी है कि हर भ्रष्टाचारी को पूरा उसकी भ्रष्टाचार पर हमला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। रोहतक बार एसोसिएशन के वकील एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। एक अधिवक्ता की संदिग्ध हालत में मौत मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। वकीलों का कहना है कि पिछले 1 महीने से वो लगातार पुलिस से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। वकीलों का कहना है कि अगर इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हरियाणा के सभी वकील हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे वकील साथी ऋषिया जी का पिछले 1 महीने के करीब होने वाला है, जिसपे डेड बॉडी हमारी इसमें जेल में मिली थी।
संदिग्ध हालत में वो हमारे को डेड बॉडी मिली थी। हमारा वकील साथी हमारे सीनियर अधिवक्ता जी हैं, जिनके बेटे थे, और पुलिस ने इस पर कोई भी हमारे संतुष्टिजनक लायक कोई भी कार्रवाई नहीं करी और हम 1 महीने तक वेट करते रहे। अब लास्ट में आके हमने सोचा कि अनिश्चित समय तक वर्क सस्पेंड करेंगे और जरूरत पड़ी तो बार काउंसिल में भी मैसेज करेंगे। इसके लिए हमने हर कोर्ट में एक ड्यूटी रजिस्टर लगाया गया है। हर कोर्ट में 2 वकील की ड्यूटी है, ताकि उनको आने वाले क्लाइंटों को, अधिवक्ता साथियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को वैध माना है। 370 खत्म करने का राष्ट्रपति को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के विलय के बाद एक अलग राज्य नहीं है। विलय के साथ भारत को संप्रभुता सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम फैसला जम्मू कश्मीर मुद्दे पर आ चुका है। 370 आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अब इस फैसले पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि राष्ट्रपति का यह अधिकार है और 370 हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के शक्तियों के अधीन आता है और ऐसे में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।